I get that. A topic that's given to you, ठीक है? And the basic question was, okay, you know what, conflict within companies, organizations, ठीक है ना, will have positive result, uh, will have negative results. So to what extent do you agree with the debate? So she has written that, you know what, conflicts can have both positive and negative effects. Okay. So I'm looking for her opening argument. के positive या negative effect क्या होगा? तो उसने बोला कि negative effect is that it distracts the workers from the job. Hence, the efficiency to work effectively decreases within companies. As a result, it reduces overall productivity of the company. All right. Conflict hence also wastes time and resources and money as workers become more focused on the conflict than their actual job. All right. Furthermore, it can have significant effects on physiological and psychological health of the people involved in the conflict, which leads to absenteeism, turnover, and reduced staff satisfaction. Group conflicts may include behaviors such as bullying and harassment, which affect people's self-esteem, and if made public, it could have extremely negative effects on public perception of the company as well as group members. All right, so this is a negative effect of conflict. However, there are positive outcomes of group conflict as well, as some of the positive effects of conflict have been identified by. Okay, so she's given the names of researchers. This is very good. However, I believe कि मैंने researchers का साल भी लिखा था, लिखा होना चाहिए, पता नहीं, but that they state that, you know what, conflict initiate changes within the company that are useful to stimulate creative and innovative ideas, and these changes are more applicable in small organizations. All right, so that's her first opening answer. ठीक है ना? जो दूसरा opening answer है, कहाँ गया? Yeah. All right. And also conflict are essential in group formation, as Tuckman theory stated that in a storming phase, the resolution of conflict may strengthen group unity and commitment to organize conflict. Also help to ensure that decisions are fully considered and explored and may prevent risky decisions making such as groupthink. Moreover, conflict create a healthy competition, such as sales staff competing for the highest sale of the month or of the year, positive effect on the total revenue. All right, so this is all right. So one thing missing, Tikana, is the conclusion. Okay, finally, how would you conclude? Please remember in your paper 4, section C, it requires a concluding paragraph. Just भाई ठीक है, तुमने दोनों side of the argument बता दिए, अब आखिर में हम क्या बोलेंगे? Conclusion is a must. So conclusion के अंदर you have to remember कि neutral perspective पेश करना होता है. You will not repeat what you said above. You will not introduce a new point. So conclusion is like the final, like finishing touches. So you're gonna say in conclusion, uh, conflicts can have both positive and negative effects on the company, right? However, it will be depend क्योंकि तुम्हें neutral रखना है, you have to keep it balanced. You're going to write the words, it would depend on the nature of the conflict, the intensity of the conflict, and the organization where the conflict is taking place. ठीक है ना? So it depends on the context as well. But क्या कहते हैं? Also, largely, if there are other methods, right, to क्या कहते हैं, if there are other methods to reach a positive outcome that is reached through conflict, then we should take alternative routes as well. Uh, but conflicts should not also be seen entirety as a negative क्या कहते हैं, factor. So when you write, it depends on the situation, kind of almost give it a neutral perspective. So basically, you're supposed to say it's both. It is negative and it is positive, but it depends on the situation. That's gonna be your concluding paragraph, ka jo gist hai, conclusion. One more thing, the points that you bring taken are very, very, very valid. ठीक है ना? I like the use of the names of the researchers जो तुमने बोला Tuckman, right? Okay, nice. Fruit and Rubin, nice. जबरदस्त है, right? I feel that तुम positive aspect of the conflict के अंदर भी किसी research के नाम डाल सकते हैं, क्योंकि I know कि ये सारा का सारा जो point है ये किसी research के ऊपर based होंगे, right? So like some names of the researchers here and there might have been like good as well.
वन खतरनाक थिंग इज दैट कि तुमने पॉइंट बहुत अच्छे लिखे हैं लेकिन तुमने पैराग्राफ सिर्फ दो बनाए. Cambridge people say कि you know what, we want two paragraphs supporting the topic, as in two paragraphs saying that there are negative outcomes, and two paragraphs that is negating the topic, as in two paragraphs saying there are positive outcomes. You're giving one for each, so try to make sure कि ये furthermore है ना, furthermore से दूसरा पैराग्राफ शुरू कर देना. और this could be a one paragraph. दूसरा paragraph जो है टकमैन वाला point तुम ला सकते हो, right? So make sure that you maximize your paragraph as well. They want four paragraphs in total. So my feedback would be कि you know what, positive aspect के अंदर थोड़ा बहुत research के नाम डाल देना, ठीक है, क्योंकि तुमने negative के अंदर डाले हुए paragraph पैराग्राफिंग का देख लेना. और कंक्लूजन मिसिंग है. कंक्लूजन मिसिंग होने की वजह से ये 12 मार्क का सवाल है. कंक्लूजन होने की वजह से तुम्हारे 2 मार्क तो कर देंगे. सो यू हैव 10 मार्क टू प्ले विद, राइट? So 10 mark to play with, right? So how many would you get out of 10? Say because of the paragraph in Tigna, CIE people are gonna consider your answer half. So you're gonna be evaluated based on क्या कहते हैं 6 marks. क्योंकि वो हम कभी भी odd number पे नहीं जाते. They stick to the even numbers, right? So out of 6 marks ठीक है ना, जो तुमने आंसर अटेम्प्ट किया उसमें से कुछ ना कुछ और कटेंगे. आई वुड से लाइक कटने चाहिए, 1 मार्क कटना चाहिए क्योंकि तुमने नेम्स और रिसर्चर्स नहीं लिखे यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर. सो यू लाइक तो 5 से कम नहीं मिलना चाहिए 12 में से. आई नो 5 सीम्स वेरी वेरी लेस, बट अगेन द मिस्टेक्स आर वेरी वेरी इजीली अवॉइडेड. तुम एक पैराग्राफ डाल दोगे ठक, तुम्हारे व्हाट 6 से कितने मार्क्स हो जाएंगे? 10 मार्क का तो 4 मार्क्स तो यूं बढ़ जाएंगे, राइट? कंक्लूजन लिखने के वजह से तुम 12 मार्क के लिए यू कैन फुली क्वालिफाई. सो दीज मिस्टेक्स आर नॉट बिग, just will come with practice. But content wise, जबरदस्त है. Kids don't struggle with the format, they struggle with the content. You did well in the content, so I expect कि तुम format में भी अच्छा करोगे. So yeah, this is a very good answer for the debate aspect. Now continuing on with the lecture. Last time we were talking about shift work, right? हमने shift work की एक study कर ली थी, right? We have two to left, two to go. And if we do the two studies, फिर हमारा organizational psychology का जो the work environment वाला जो chapter है उसका second section में खत्म हो जाएगा. So let's start with gold, shift works and accidents. So again we're studying shift works. So the idea is कि ठीक है, shift work does it have health consequences? वो नट्सन से मालूम हो गया था कि भाई कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता. Now we're going to talk about does shift work cause accidents, specifically nurses. To find it out, Gold की research की तरफ हम जाते हैं. So he takes one hospital into account. So you can already say कि generalizability से मसला होगा. But within that one hospital, he chooses 878 nurses. So yeah, high number of samples. So sample के size के base पे क्या पता generalizable होगा कि हो या नहीं हो. So basically what he did was he approached 878 nurses for a study, and he basically recorded them for 2 weeks. And what did he record of the nurses in his 2 weeks? Basically उनसे पूछता था कि भाई तुम सोते कितने बजे और तुम इतने कितने बजे, to get the amount of time that they were sleeping. He would also ask the amount of sleep the nurse, quality of sleep that the nurses were getting. He asked कि भाई तुम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करती हो स्लीप के हेल्प के लिए. He also asked कि क्या तुम ड्राइविंग करते वक्त नींद के झटके आते कि नहीं आते, ड्राइविंग करते हुए कभी गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ, गाड़ी और सॉरी ऑन जॉब होते हुए क्या तुमसे गलती हुई कि नहीं हुई, एंड क्या नींद की कमी की वजह से did you ever suffer personal injuries. So basically he wanted to find out आपके nurses को shift में डालने की वजह से क्या उनकी नींद और एक्सीडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता कि नहीं पड़ता. So the 878 nurses he was studying, right, can be classified into 3 types of nurses. एक वो nurses हैं जो क्या कहते हैं हमेशा 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 सुबह सुबह आती हैं, उनका टाइम फिक्स्ड होता है. दे आर द नर्सेस, ठीक है ना, जो सुबह के वक्त आती है. एक नर्सेस ऐसी जो हमेशा रात के वक्त आती है. 100% कंफर्म है ये परमानेंट औरत रात के वक्त आएगी नर्स. थर्ड कैटेगरी नर्स ऐसी जो
चेंज होता रहता है। बेचारे जो नर्सेज होते हैं कभी दिन में आते हैं कभी रात में आते हैं, रोटेट करते रहते हैं। सो यू हैव वन ग्रुप विच इज 100% परमानेंट डे शिफ्ट, सेकंड ग्रुप द परमानेंट नाइट शिफ्ट, एंड द थर्ड जो टेम्पोररी जो रोटेट होता है, नाइट डे नाइट डे नाइट डे। और नर्सन जो सॉरी जो गोल्ड है जो रिजल्ट्स कंपेयर करेगा, ही इज गोइंग टू कंपेयर द रिजल्ट्स बिटवीन दीज थ्रू थ्री ग्रुप ऑफ नर्सेस। सो इट्स एन independent major design. He gave 878 forms to nurses. उसमें से 687 forms वापस आए. So obviously some nurses ने choose किया not to participate in the study. Gold did not force them to take part in the study. So right to withdraw obviously यहाँ से वाज़ेह हो जाता है. So right to withdraw was there in the research. So this makes it ethical. All right. So he tracks them for 2 weeks. Results क्या आता है? वो कहता है कि there is one concept called anchor sleep. Anchor sleep क्या होता है? Anchor sleep is that sleep का duration that क्या कहते हैं should be present in everyone's sleep. It does not matter तुम कब सोते हो, चाहे रात के 12 बजे सो, चाहे रात दोपहर के 12 बजे सो, चाहे शाम के 4 बजे सो, ठीक है ना। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट के जब भी तुम सोगे ना तुम्हें कम से कम 4 घंटे की लगातार नींद आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 12 से 4 या 3 से 7, 4 घंटे की लगातार नींद को हम एंकर स्लीप कहते हैं, राइट। एंकर स्लीप। इफ यू डोंट हैव 4 घंटे की लगातार नींद, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटा सोए फिर 10 सेकंड के लिए उठे फिर दोबारा सोए 2 घंटे के लिए, दैट विल नॉट क्वालिफाई फॉर यू एंकर स्लीप। एंकर स्लीप इज द स्लीप दैट यू हैव 4 hours स्ट्रेट कंटिन्यूसली, इसको एंकर स्लीप कहते हैं। एंड इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरीवन स्लीप शेड्यूल, भले वो कब सोए, ठीक है। ऑलराइट, सो गोल्ड कहता है कि हम उस स्लीप को डिस्टर्ब स्लीप कहेंगे जहां पे एंकर स्लीप नहीं होगा। मेक सेंस, राइट। सो अभी तक तो हमें नहीं पता कि कौन सी ऐसी ग्रुप ऑफ नर्सेज है जहाँ पे एंकर स्लीप नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उनका नींद का शेड्यूल मालूम करने से पता चल जाए कौन सी नर्स को एंकर स्लीप मिल रहा है, कौन सी नर्स को एंकर स्लीप नहीं मिल रहा। जिस नर्स को एंकर स्लीप नहीं मिल रहा हम उसको बोलेंगे कि भाई उनका जो है स्लीप डिस्टर्ब हुआ है, या बेसिकली उनका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हुआ है। तो बेसिकली उनका सर्काडियम रिदम डिस्टर्ब हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। जिस स्लीप के अंदर एंकर स्लीप नहीं है उसका हम बोलेंगे उस नर्स का सर्काडियम रिदम डिस्टर्ब हुआ है, 12। So what about the questionnaire? Through a questionnaire, right, we found कौन से टाइप ऑफ नर्स को सबसे कम एंकर स्लीप मिलता है। रोटेटर्स nurses had 0% anchor sleep and that's very dangerous. डे नाइट वालों को सबसे ज्यादा एंकर स्लीप मिला है, ठीक है। इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल। कौन से ग्रुप ऑफ नर्सेज 5 घंटे से ज्यादा सोते हैं, राइट। सरप्राइजिंगली नाइट शिफ्ट वाले नर्सेज 5 घंटे से ज्यादा कम सोते हैं अपने दिन में। ऑलराइट, that's fine, that's expected, right, but that's not the point of the study. The point of the study is के accidents फिर कौन सबसे ज्यादा करता है। you can see कि सबसे ज्यादा accidents जो होते हैं रोटेटर्स करते हैं, उसके बाद जो है सॉरी काम पे जो एटलीस्ट जो सोते हैं सबसे ज्यादा जो नींद के झटके आते हैं रोटेटर्स को आते हैं, नाइट शिफ्ट वालों को आते हैं, डे वालों को सबसे कम आते हैं लेकिन सबसे कम आते हैं। एंड सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स का जो खतरा होता है वो रोटेटर्स को होता है 3.9, देन नाइट शिफ्ट वाले। डे टाइम वालों के नर्सेज का बिल्कुल कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था एक्सीडेंट्स वाले का। So you can see that there is some relationship between not having anchor sleep, having poor quality of sleep, to almost having a road accident, to almost sleeping on the job. So there is some relationship between the uh, क्या कहते हैं quality of sleep and accidents that you have on work. There were some results that did not meet this trend. Okay, there were some factors that additionally impacted the results of the experiment. That is, कि some nurses जो fresh होती हैं, जिनका इतना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके भी एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, भले वो डे हो नाइट हो रोटेट हो डजंट मैटर। लेकिन कुछ नर्सेज जो फ्रेश होती हैं उनके भी एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड नंबर टू, द यंगर नर्सेज have more chances of getting into road accidents as compared to nurses above the age of 35. And does not matter कि आप कौन से group of nurse के अंदर आओगे, if you're younger you're gonna have more accidents
on the road and in the job. But Bharat, this is the main result that you're supposed to remember. Are you supposed to remember fact and figures? Nahi. You're just supposed to remember anchor सिर्फ सबसे ज्यादा खराब किसका था. You're supposed to remember कि कौन सबसे ज्यादा काम पे सोता है, किसका सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होता है. That's it. सबसे highest and सबसे lowest. That's it. You're not supposed to remember the exact numbers. So that is goals research, and we can conclude कि you know what, nurses, especially who are rotators, who have disturbed circadian rhythm, have poor quality of sleep, which makes them have more chances of road accidents, and which makes them have more chances to not nod off or sleep on the job. So yeah, so that's the entire experiment. Now let's talk about the evaluation. I already told you that nurses को right to withdrawal था, क्योंकि some nurses क्या कहते हैं, did right practice right to withdraw. हमें nurses के नाम नहीं पता चले. We don't know their names. We don't know their क्या कहते हैं, where they work, exact name of the hospital. So it is confidential in that regard. Were nurses given something which caused them harm? नहीं, बस questionnaire दिया गया था. So nurses were protected from harm as well. Is it generalizable? Yes and no. If you look at the number of people we have, then yes. If you look at the city where it was conducted, only one. So yes and no. Is it replicable? Yeah, we can ask the same questions again. These are standardized questions that were asked with every nurse. So the standardization of the questions can be done. So it is replicable. Does this study give us useful information that we can apply? Yeah, we can apply that. Ideally, we should be considerate of the rotators, right? Rotators की क्या पता हम ऐसे job दें जिसके अंदर वो accidents कम perform करें. Rotators can crash their car any time. Same with night shift. तो क्या पता इनको pick and drop देना चाहिए so they minimize, crashing on the road. So it is applicable in that regard. Was this result valid? Is this experiment valid? Well, it was a self-report questionnaire after all. The nurses could have lied on the questionnaire, right? Well, why would you honestly tell के तुम काम पे सोई थी क्या नहीं सोई थी? This will get you in the trouble with the management. So there are chances that nurses may not have answered honestly. So there might be some demand characteristics which decreases the internal validity of the research. But this was done at a real life hospital. This was not a fake hospital. So there is some realistic element to this research. So external validity would be high. Uh, yeah, that's it. So this was the experiment related points. What about individual situational? It is a situational factor because the nurses were not at fault, right? जिस शिफ्ट में डाला गया उस शिफ्ट का असर नर्सेस को था, राइट. फॉर तो एंड यू कैन बेसिकली सी यहाँ से जो भी शिफ्ट इस शिफ्ट के अंदर आता था उनके सबसे खराब रिजल्ट आते थे. तो दिस इज सिचुएशनल नॉट इंडिविजुअल इन दैट रिगार्ड. इफ यू change the shift, their numbers might change. Is it reductionist or holistic? Well, let's look at it. Now, Gold की research focused on the sleep and accidents. If you feel कि you know what, Gold ने कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे which could influence accidents and sleep. If you feel that way, then it is reduction. But if you feel कि Gold ने सारे के सारे सही सवाल पूछे हैं, then it is क्या कहते हैं, holistic. Maybe उनकी marital life consider नहीं की गई, right? हो सकता है कि when they go home they have additional responsibility which disturb the sleep. We did not consider their marital life. We did not consider whether they worked more than one job. क्या पता कि जो डे वाली नर्सेस हैं चाहे नाइट शिफ्ट कहीं और करती हो या नाइट शिफ्ट वाला डे शिफ्ट कहीं और करते हो. So we don't know that. And this would obviously impact our result क्योंकि अगर एक नर्स डबल डबल जॉब करे किसी और हॉस्पिटल जाके तो वो थकी भी होगी, तो ऑब्वियसली काम पे भी सोएगी और एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा करेगी. बट वी डोंट नो दैट, सो इट इज़ काइंड इन दैट एस्पेक्ट रिडक्शनिस्ट. ये था. और क्या होगा, इंडिविजुअल सिचुएशनल रिडक्शन होलिस्टिक. नेचर रिडक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हम कोई चीज़ नर्स को सिखा नहीं रहे, ठीक है. फ्री विल डिटर्मिनिस्टिक भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वी जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग फैक्टर्स. ये नहीं ढूंढने के
यू नो व्हाट, क्या ये फैक्टर नर्स के कंट्रोल में नहीं है, इस पर डिबेट पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि इट डज नॉट अप्लाई टू इट. इधर कल्चर बायस, वेल वी कैन से दैट, क्या पता कि अगर हम मैसाचुसेट्स या पाकिस्तान में रिसर्च करते हैं तो क्या पता कि ये रिजल्ट थोड़े अलग आते हैं, स्पेशली इन द ड्राइविंग फ्रॉम वर्क वाला सीन. पहली बात है कि हमारे हमारे पास इतना ज़्यादा सैंपल ऑफ नाइट शिफ्ट वाले नर्सेस और रोटेटर्स नहीं मिलते, डे शिफ्ट के ज़्यादा मिलते हैं. दूसरी बात है कि क्या क्या पता कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर रात को शायद कोई और छोड़ने आता हो, राइट, या पिक एंड ड्रॉप देते हो, तो ड्राइविंग का जो एक्सीडेंट्स वाला फैक्टर कम होता होगा. सो हो सकता है कि किसी कल्चर टू कल्चर के ना डायनामिक्स अलग होंगे, तो दैट्स वाई नंबर्स या रिजल्ट भी थोड़े बहुत चेंज होंगे. खासतौर पर जो कंजर्वेटिव कल्चर्स होते हैं which don't prefer women going out alone at night or with some company. So I guess उसके हिसाब से. Otherwise, that is the entirety of Gold's research. So this is a summary, right? जो हमने पूरी बात की. Basically, 878 nurses, जिसके अंदर से 678 questionnaires वापस आए. हम डे शिफ्ट वाले लोग को नाइट शिफ्ट से कंपेयर करते हैं और उससे रोटेटर्स कंपेयर करते हैं कि द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे स्लीप, द क्वालिटी ऑफ स्लीप, नॉडिंग ऑफ ऑन वर्क एंड द एक्सीडेंट्स दैट दे हैड. सो इफ यू, एज यू कैन सी, पूरे आंसर के कहीं भी नंबर इंक्लूड नहीं है. Rotators had more sleep wake cycle disruption, nodded off more at work. Rotators had twice the hour of nodding off at work. So it's like more and less. So yeah, मालूम करना पड़ेगा who was more likely and who was less likely. That's it, nothing else. So that's the goals research. ठीक है ना? Strength and weakness of goal research we have discussed. कि generalizable नहीं था, सारे के सारे females थे. Internal validity demand characteristics की वजह से compromise हो सकती है. Replicable strength है, ethical strength है, right? Applicability strength है. So yeah, all of that. So this is called research. They do ask के नाइट शिफ्ट वाले नर्सेस का क्या मतलब है, डे शिफ्ट वाले का नर्सेस का क्या मतलब है, रोटेटेड नर्स का क्या मतलब है. रोटेटेड वाले वो होते जो कभी शिफ्ट दिन में करते फिर कभी रात में काम करते हैं, तो शिफ्ट चेंज होते रहते हैं. या इसके अंदर इन्होंने न्यूमेरिकल डेटा पूछा, बट यू नो व्हाट, you don't need to remember the numerical data. ठीक है, if you write more or less फिर भी वो चलेगा. So as I said, केस स्टडी का जो रिजल्ट है, कौन सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम है, ये याद करना होगा. इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट टू रीजंस वाई गोल्ड ने 800 पता नहीं कितने सर्वे भेजे थे, उसमें से 687 सर्वे वापस आए. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब सर्वे कम वापस क्यों आए? यू कैन से दैट some people might have forgotten it. Genuine reason है. Some people may have, क्या कहते हैं, misplaced it. Some people that may not want to take part in the experiment क्योंकि it exposes their errors and exposes their sleeping on the job, तो डर के मारे नहीं participate किया होगा. So you can add possible explanations for it. So discuss the strengths and advantages of using questionnaires to gather data about accidents in the workplace. All right, see, this question does not refer to gold का research. Is basically generally asking कि भाई अगर हम questionnaire इस्तेमाल करते हैं to find out accidents and क्या कहते हैं in the workplace about shift work, तो generally क्या strength and weaknesses है? The strength is that questionnaires can target many number of employees at the same time. क्योंकि if you think about it, इंटरव्यू के लिए वहाँ पे इंटरव्यू को होना लाजमी है. तो इंटरव्यूअर एक बंदे से इंटरव्यू लेके फिर फारिग होकर फिर दूसरे के पास जाएगा, टाइम लगेगा. Questionnaires can target many number of people at the same time. Number two, interviewer का मतलब है कि you're gonna be face to face with the experimenter, so your identity may not be hidden. Questionnaires के अंदर there is no contact with the experimenter. फॉर्म ले लिया, आप चले गए, घर के अंदर भर दिया, आप वापस देते हो, आप फॉर्म के बाद नाम नहीं लिखते. सही है. सो क्वेश्चनर्स के अंदर चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनोनिमस लो, तो आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादातर मेंटेन रहती है. सो दैट्स टू एडवांटेजेस. थर्ड एडवांटेज डिसएडवांटेज ये होगा कि
सॉरी फर्स्ट डिसएडवांटेज ये होगा कि अगेन क्वेश्चनर्स है और स्ट्रेंथ है उसके उसके एक्शंस के बारे में मालूम करना चाह रहे हो तो पीपल में लाई ऑन इट मे नॉट गिव अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज सो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है सही है वन मोर डिसएडवांटेज इन द वर्क प्लेस questionnaires can get misplaced questionnaires can get mixed up with other documents in the workplace so the chances are that people may not or you may not get as much questionnaires back जितना तूने distribute किया था तो हो सकता है कि response rate कम आएगा one more disadvantage is that you know what you will not get in depth amount of data तुम्हें पता चल जाएगा कितने लोग कितना एक्शन करते हैं पर क्यों करते हैं the reason नहीं पता चलेगा या इतना in depth answer नहीं पता चलेगा if you use a questionnaire ओवरऑल तुम्हारे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जनरल इन्फॉर्मेशन आएगा so yeah that's it and यहाँ पे लिखा you should write a conclusion so you write in conclusion using a questionnaire to gather data about accidents in workplace does have its strengths and weaknesses uh, but it depends on the situation as in if there are other methods that would be appropriate or is the questionnaire a right approach to use. Mm, a questionnaire will have an advantage but we should not limit ourselves and if we can we should also use other techniques with questionnaires so that we can gather more in-depth data so basically you're saying कि it depends on the situation हमें questionnaire इस्तेमाल करना चाहिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए हमें दूसरे टेक्निक भी इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन क्वेश्चनर को साथ इस्तेमाल करना चाहिए सो लाइक you're making sure कि it's a neutral statement yeah so that's the entire content about gold कोई मसला कोई क्वेश्चन पूछना है or anything about gold or is it clear can we discuss both sides of the So, generality here uh you can we discuss both sides of the generality within the exam no no in the exam you're going to choose either it is generalizable or it is not generalizable right um let me clarify see the point of generalizable है कि नहीं will only come in the evaluation part right evaluation जो paper 3 में होता है evaluation part के अंदर आता है right so evaluation के अंदर right you either side with you only side with one side right debate के अंदर you side with both side तो अगर depends evaluation वाला question जो होगा ना उसके अंदर you are just gonna write yes or no लेकिन अगर डिबेट क्वेश्चन के अंदर आता है डिबेट हमेशा हमेशा पेपर 4 के अंदर आता है फिर तुम दोनों साइड के बारे में खोलो but if it's evaluation of question 3 sorry paper 3 फिर then you're gonna write one side even though both sides can be applicable तुमसे एक साइड पे लिखोगे डिबेट के अंदर you can use both does that answer your question Romula ठीक है all right so that concludes our second section of physical क्या कहते हैं नहीं, work conditions right we now come on to the third section the third section is gonna be about so health and safety as in how do you promote health or how do you make sure that क्या कहते हैं employees are safe in the workplace how why does accidents happen in the workplace right how do you ensure their safety so बस basically इसके बारे में बात होगी so let's talk about why accidents happen in the workplace all right so basically जो पहला section accidents well, this is named the first topic within this section ठीक है so basically people say that you know what
people who work in companies, they are all part of operation and operated machine system. Yeah, man, machine system. As in, human workers interact with the machine to get their jobs done, right? Like I'm using a laptop to get my job done. This is the operator machine system. So yeah. So within that operator machine system, what happens is that there are some tools that help us to do our jobs. For example, the displays that we get. So the displays, ये जो visual display होता है, ये auditory display आता है, जिन मशीन से आवाज निकलती है, ये machines के अंदर जो तुम चीज देख सकते हो, that helps us to communicate with the machines, right? अगर मतलब if you press a button, but if the button does not make any sound, or if the button does not give any light, you're not sure whether the machine is working or not. So basically, we need these displays to know whether the machine is working or not, right? And sometimes these can be cause of an accident. So basically, if we want to narrow it down, we're going to talk about displays as well. What type of displays there are within the visual displays, what type of displays up there are within auditory displays, and how are the advantages, how are the disadvantages, and is there any incident which because of error of any display जिसकी वजह से गड़बड़ हुई हो. This is what's going to be the first chapter of this section is about. So let's talk about displays. When you have visual displays, right, there are क्या कहते हैं three type of ones. जो quantitative data देता है, जो qualitative data देता है, and जो ऐसा डेटा देता है जो neither qualitative neither quantitative हो, जो सिर्फ इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल होता हो. हम इसको एंड में करेंगे. इफ यू ड्राइव अ कार, गाड़ी चलाते हुए जो स्पीडोमीटर होता है, जो नीडल वाली होती है, राइट, या वो डिजिटल वाली होती है, दैट गिव्स यू क्वांटिटेटिव डेटा, राइट, गिव्स यू नंबर्स. Weighing machine, thermometer, everything gives you quantitative number. So you need quantitative indicators when you want to be precise, right? When you want to be exact, जहाँ पे कोई decimal का मसला जो it will end up catastrophic. So nuclear power plants के अंदर, you know what, जहाँ तुम chemical बना रहे हो, medicine manufacture कर रहे हो, जहाँ पे आप exact temperature होना चाहिए, everything जहाँ पे तुम precision चाहिए होता है, वहाँ तुम visual display इस्तेमाल करोगे. Now let's talk about qualitative displays. Qualitative display का जो एग्जाम्पल होगा दैट कलर्स. कलर्स हो सकती हैं, राइट. क्वालिटेटिव डिस्प्ले का जो एग्जाम्पल होगा, वर्ड्स लिखे हुए होंगे, वर्ड्स ऑन द स्क्रीन, राइट. कोऑर्डिनेटेड डिस्प्ले का एग्जांपल होगा जो साइड वॉक पे जो होता है ना, कि लाइक जीब्रा क्रॉसिंग के अंदर तुम्हें रोड क्रॉस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें आदमी खड़ा होता है चलता है. अगेन, so basically when you see that display, it comes down to your judgment, कि basically what do you think the sign is saying to you. So when you approach a red signal, so you should know what the red signal means. So it comes down to judgment. So these colors, right, or these word give in has some information on it, and you're supposed to understand what this information is about. If you don't understand what this information is or what does it represent, you're gonna have a very difficult time. So yeah, so ये मसला होता है वहाँ पे. Check reading. Check reading का मतलब है कि basically it tells it helps you check things. It used to check things, right? For example, अगर बत्ती चल रही है तो AC on है, अगर बत्ती बंद है AC off है, right? Uh, and it's just as simple as that, right? This tells you whether the machine is operating or not operating, right? This tells you whether क्या काम हो गया नहीं काम हो गया, as in वॉशिंग मशीन के अंदर वो आवाज भी बजती है और वो लाल बत्ती भी चल जाती है जब वो क्या कहते हैं काम हो गया नहीं होता. माइक्रोवेव के अंदर वो डिस्प्ले बंद खोल हो रहा होता है, राइट, एंड आवाज भी आती है पीप करके. सेम थिंग, इट जस्ट हेल्प्स यू टू नो whether the job is complete or incomplete, or whether the machine is on and off, right? So it helps you check that. There's nothing else is there. So it gives you a limited information about limited functions. That these are all visual display that you are going to figure out using your eyes. Let's talk about displays that use your ears, auditory displays. So any sound is going to be an auditory display, right?
So common example of auditory displays that you have in companies or power plants or factories are bell. घंटी बजाते हैं तुम्हारे क्लास के अंदर, घंटी बजाते हैं तो इंडिकेट के भाई पीरियड खत्म हो गया. नॉर्मली जो बजर होता है, बजर दिस इंडिकेट्स के कुछ ना कुछ गलत हुआ है. सायरन का मतलब है कोई ना कोई इमरजेंसी, राइट. दीज साउंड्स, whatever sounds that you hear, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है. So the sounds communicate some meaning to the workers, right? uh, so this works where जहाँ पे बंदा जो है ना does not have a clear view of things. For example, जहाँ पे बंदा has to look so many things at the same time, right? तो obviously एक चीज को देखेगा दूसरी चीज मिस आउट हो जाएगी. सो वहां पे ऑडिटेड डिस्प्ले काम आ सकती है, क्योंकि इफ अ पर्सन लुकिंग एट समथिंग एल्स, आवाज किसी और चीज की आएगी, सो ही इज गोइंग टू keep track of both the things. So it is useful when visual displays are very, very difficult to use at that situation. रिगियो कहता है कि a high sound, जो loud आवाज होगी, ये repetitive sound होगी, these are usually perceived as an indication of danger. So according to a research, Riggio found out that, you know what, if you want to indicate some emergency, use repetitive sounds or high, क्या कहते हैं, high volume sounds. क्योंकि if you use a soft sound or if you use a sound जो एक दफा बजती दोबारा नहीं बजती, पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि emergency आई है. So if you want to communicate emergencies, these are the sounds that you should go to. So yeah, so basically we have auditory displays and we have visual displays. इनके अपने uses होते हैं. Visual displays are used when you have a loud work environment या मशीनरी चल रही आवाज नहीं समझ में आ रही, so वहाँ पे obviously visual displays काम करेंगे. Visual displays are used when the message is long. तो जब लंबा मैसेज होता है तो you need the message to be written, right? वो सुनाई देगा, आधा सुनाई दिया, आधा सुनाई नहीं दिया, you need the message to be repeated. So when you want the message to be repeated, right, you want a visual display. Workplace noise हमने बता दिया. और all right, you want to have visual displays, right, when the message is never gonna change. For example, like no smoking sign बना होता है in hospitals, right? वो आज है, कल भी होगा, परसों भी होगा. तो इसका ये मतलब एक दफा लगा देना, चेंज नहीं करना पड़ेगा. सोचो कि हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई चीज चेंज हो रही होती है, हम उसको उतार के लगा रहे होते, उतार के लगा रहे होते, तो इट वेरी हेक्टिक. सो विजुअल डिस्प्लेस आर यूजफुल व्हेन द मैसेज इज लॉन्ग टर्म. ठीक है. Audio displays, as I said, it is useful when you need to look at many, many things at the same time, or when you don't have a clear view of things, right? तो वहाँ पे audio displays काम आएंगी. Or when the work area is too dark to see. Sometime when the message is urgent, right? For example, so people call you when the message is urgent because they don't know कि तुम text कब पढ़ोगे. Same thing. Visual displays के ऊपर अगर तुम्हारी नजर नहीं है, so that's going to be a problem. The audio displays are used to communicate urgent messages, so that's why you hear sirens, sounds. Audio displays are useful when the message keeps constantly changing. Because if you use visual displays, it's going to take a long time to give that information, and by the time the information reaches the person, क्या पता information outdated हो. And displays are useful when the workers are moving. Okay, when they move, they don't have their eyes on the same thing. So when they move, क्या कहते हैं, sound is effective to communicate with them. The timer for Zoom is about 10. तो मैं दोबारा lecture restart करके link भेजता हूँ वहाँ पे.